हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं प्रोफेसर का स्केच की आउटलाइन में आज ड्रॉ करने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। मैंने इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट लिया है, क्लियर है बहुत ही। आपको भी ड्रॉ करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो पिक है उसकी भी लिंक दी है और जो आउटलाइन में ड्रॉ करूँगा उसकी भी लिंक दी हुई है। मेरे आप आउटलाइन को देखकर आउटलाइन ड्रॉ करो, आपको आसानी होगी। और वीडियो को देखो मैं किस तरह से पूरा स्केच फ्रीहैंड मेथड से इसे ड्रॉ करता हूँ। और यार प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको फ्रीहैंड मेथड से वीडियो चाहिए या फिर ग्रेड मेथड से वीडियो चाहिए। नहीं तो मैं फ्रीहैंड मेथड से ही ड्रॉ करता जाऊँगा और आपको समझ में आएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रेड मेथड से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो गैस, पेपर के बारे में बताते तो आपको मैंने हमेशा की तरह मैं आइवरी का ही पेपर यूज़ करता हूँ। तो इसमें भी आइवरी का 210 GSM वाला पेपर यूज़ किया है मैंने, A4 साइज़ का। और पेंसिल है HB की 0.5 वाली मैकेनिकल पेंसिल है, 10 रुपीज़ में मिलती है कहीं पर भी। और आपको एकदम आउटलाइन को ड्रॉ करते समय एकदम आप हल्के हाथों से ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसे ज़्यादा प्रेशर मत दो पेपर पर। लीड बहुत ही छोटी होती है 0.5 वाली, तो ज़्यादा प्रेशर देकर अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो पेपर दब जाएगा और अगर आपको इरेज भी करना होगा तो एक निशान पड़ जाएगा वहाँ पर। तो हल्के हाथों से ड्रॉ करो, कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो आप उसे इजीली इरेज कर सकते हो। और गाइज, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बिल को भी दबा देना ताकि मेरे हर स्केच की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी मदद हुई हो मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो यार। तो इसमें मैं सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करना बताऊंगा आपको, और इसके बाद के जो भी एपिसोड्स आएंगे फेस शेडिंग के पूरे रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ करेंगे हम। तो पूरे एकदम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लाऊंगा आपको और कैसे करना है ड्रॉ सब बताऊंगा आपको डिटेल में। अभी से पूरा स्केच ड्रॉ मत कर लो आप, नहीं तो क्या होता है कि आपने आउटलाइन ड्रॉ कर ली और आप पूरा स्केच ड्रॉ कर लेते हो, फिर आप बाकी की वीडियोस नहीं देखते और मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ आपको, तो आप करेक्शन नहीं कर सकते ताकि आपने पहले से ही बना के रखी होती है स्केच। तो ऐसा मत करो, मेरे जब वीडियोज़ आएंगे तभी आप ड्रॉ करो। इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ कहाँ पर कौन सी पेंसिल से शेडिंग वगैरह करता हूँ, तो आपको एकदम डिटेल में पता चल जाएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है स्केचेस में, कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर फॉलो भी करना हो तो फॉलो भी कर लो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे DM कर लो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। आई से स्टार्ट करो, एक मेजरमेंट लेने में आसानी होती है। इसके बाद की जो हम बनाएंगे ड्राइंग, टोक्यो की बनाएंगे मनी में ही, तो उसकी आउटलाइन में ग्रेड मेथड से बनाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ड्रॉ करनी वो वाली भी। बॉक्स में मुझे बताओगे आपको कौन सी ड्राइंग चाहिए, कौन से पर्सन की चाहिए मनी में से। बहुत ही गजब की सीरीज़ है यार, मतलब क्या ही प्लानिंग करता है बंदा। वीडियो देखो, ज़्यादा बातों में बोर नहीं करूँगा आपको।